रचना करते देवता लोग भी रचने लगे। समस्त देवता लोग भी अपने अपने विमान में आरूढ़ होकर के बैठ करके नित्य प्रत्यह उनके चरण कमल की वंदना ही करते रहते हैं। साक्षात लक्ष्मी देवी जिनकी चरण कमल की और मॉडल भाषा देती वह चरण कमल की महिमा क्या वर्णन करो, जिनकी चरण कमल में 19 प्रकार के चिन्ह बताए। भगवान होते हैं, भगवान की चरण कमल कितने चिन्ह है। So, continuing from yesterday's Harikatha about Gopkumar's story. The Lord's lotus feet has 29, 19 signs, different marks, and these are mentioned in different scriptures. And when Gopkumar heard that Maharaj explaining about Padmanabh temple, like how the king completely they surrendered to the Lord, and with all their wealth they are serving the Lord. So these Brahmins are very nishthavan and they follow the Vidhi Marg. They serve Thakurji. Perfect time. As per the time they wake up the Lord, as per the time they offer the food stuff for Lord, and as per the time, very strictly, they make Lord to go for sleep. So this Ananta Padmanabh temple is perfectly time to time. They maintain the rules and regulations. So as per the time they open the door, as per the time they close the door. If anyone comes, they not allow after the timings. So for having the darshan of Thakurji, the 4 kinds of society people, Brahman, Vaishya, Kshatriya, Shudra, everyone goes and have darshan and everyone takes prasad. Sannyasi, Grihastha, Vanaprastha, Brahmachari, everyone, whoever comes, for everyone, they distribute prasad. They distribute the Ananta Padmanabha's Mahaprasad. From 24 hours, they do festival. After Thakurji take rest, the devotees stay outside and do dancing and kirtan. All kinds of facilities are available there. So Brahmin is telling in Prayag, O Gopkumar, you go there and fulfill your desire. Like this, by hearing the glories of Anant Padmanabh, Gopkumar heart, he got a desire to visit Anant Padmanabh. By doing Naam, he went further. So chanting this particular mantra, so this Gopkumar reached that particular place. So however, that Brahman explained in the same way, the Lord's service, worship was done. By seeing this, Gopkumar's heart got melted and tears flowed from his eyes. He was telling, what a beautiful Thakurji's seva they are doing. Maharaj is telling, like yesterday I already said that Brahman people, they do
Thakurji Seva very strictly, and 56 kinds of bhog they offer to the Lord. मानो वो प्रसाद साक्षात में लक्ष्मी देवी के द्वारा अचित है, मानो लक्ष्मी देवी And this bhog is prepared by Srimati Lakshmi Devi herself. अमृत प्रसाद Such a beautiful Amrit Prasad, वो कुमार nectarian Prasad. Gop Kumar said, "O Maturi Brahman, like this every day in that temple, I used to go and take darshan of the Lord. And I was doing Gopal Mantra Japa." So he said, I never left two things in my life. One is Gopal Mantra and this Maha Mantra. Every day, every time I used to chant these two things. See, by chanting this mantra, I got a desire in my mind. If at all I get service of this temple, for Thakurji I would like to do more seva than this. So while doing Gopal Mantra Japa, I used to think this thing only. Kalpataru. This mantra is like fulfilling desire tree. So in this way, while doing Gopal Mantra Jap, he got the same feeling that if I get this temple seva, then I can do more service. So this is the prabhava of mantra. In that kingdom there was no son or daughter, and the king immediately got ill, and the king was thinking, I am going to leave my body, and this Thakurji Seva, who will do? Who will take care of this kingdom? He started to do chintan, thinking. So the Lord came in the dreams of the king and said, so you give all the seva for this small boy Gop Kumar. So the king, morning he woke up and he did a deed. In that deed, said Gop Kumar's kingdom and service he hand over, and after that the king left his body and went to the transcendental abode. All the people made Gop Kumar to sit on the royal crown and they gave the service of the Lord. Gop Kumar said, although I get the kingdom, but I never want to take the king's dress, and I want to be a normal Gopal in my hand flute. So Gop Kumar is telling, although I was a king, I never took the king's dress. I was just like a normal cowherd boy. All the ministers were doing their works as per my instructions. And for Thakurji Seva, I made a highest standard in the temple. So everybody should come to Mangalarti. Old, one who do not have eyes, one who do not have legs, everyone should come to Mangalarti. This he made strict rule. So Gop Kumar said, I made a transportation. Whatever they need, I have provided them.
So every time the temple was filled with crowd and people. उससे भी दुगुना तीन गुना मैंने बढ़ा दिया। So Thakurji Seva, which whatever going on जितने from the भी राज्य previous है, time, जितने संपत्ति है, in that 3 times, जितने जो 4 times कार्य more the Seva was सब happening. ठाकुर जी की सेवा And whatever the treasure was there in the kingdom, everything I used for the ठाकुर Thakurji जी की Seva. सेवा चलने लगी। ब्राह्मण लोग Thakurji's this kind of Seva was going on, and सेवा the Brahman people मैंने काल कहता है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण लोग और सेवा was doing Seva very strictly. Everyone's food, everything was right. किंतु देखो ये मातु ब्राह्मण ऐसे कुछ दिन चलने के बाद Maturi Brahman, एक दुख उत्पन्न after few days passed, in my mind I got a sorrow, pain. ये ठाकुर That जी was को two क्या है reasons. ब्राह्मण लोग जो है ये One, अत्यंत जो है कट्टरवादी कर देता है माने नियम कानून में पक्का रहता है so the Thakurji Sevaks, they are very very strict in the service of the Lord. For example, if anybody wants to come for the darshan of the Thakurji from the very long time, no, they close the door. Once they close the door, they do not give the darshan of Thakurji. They are very very strict. ठाकुर जी के पट बंद होता है 12 बजे घंटा बजे घंटा जे ढंग 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 12 बज जाता है पट बंद हो जाता है और उस समय कोई दौड़ करके आए ठाकुर जी के पास दर्शन नहीं हुआ बोला अभी नहीं होगा 5 बजे दर्शन होगा हैं अभी ठाकुर जी सायं में जा रहे हैं 12 बजे ठीक ठाकुर जी सायं हो जाए 11:30 बजे ठाकुर जी की भोग आरती है 11 बजे ठाकुर जी भोग लगते हैं 11:30 बजे ठाकुर जी की आरती ऐसे ठीक 12 बजे के शांति स्नान ठाकुर जी की सायं वास्तव जब पट बंद हो जाता है कोई भी आ जाए किसी के लिए कोई अनुमति नहीं गोप कुमार कहने लगे So Gopkumar was telling, इसको देखकर कि मेरा मन by saying this, I got pain in my heart. Many people come from such a far place and they come for the darshan of Thakurji. But as per the strict rule, they close the temple doors and they do not give darshan for anyone whoever comes late. So they come to the king and they request, please do something. But when the king speaks to the Brahmin, they say, we cannot break the rule which we are following from the long time. So Gopkumar was feeling सिंपैथी सहानुभूति नहीं sad and also is feeling sympathy for the people. ब्राह्मण लोग केवल अपने नियम की तरह है विधि मार्ग में इतने चलते हैं और दूसरी है ठाकुर जी के मंदिर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भेद क्यों रखते हैं And हरि के लिए भजासो हरि का the second thing, why they keep differentiate between Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. हरि के भजे सो हरि का हरि जात पात कुछ नहीं है इसलिए हम आप किसी के गोत्र हो आप कश्यप गोत्र हो सांडिल्य गोत्र हो Whichever Gotra you are, Kashyap Gotra, Sandilya Gotra, but when you take the Vaishnava Mantra Diksha, Achyut Gotra, then you will become Achyuta Gotra. अच्युत माने भगवान श्री हरि जिससे कभी च्युत नहीं होते हैं अच्युत होते हैं किंतु ब्राह्मण लोग कट्टरवादी है मैंने जो कहा है नहीं तुम शूद्र हो तुम ब्राह्मण हो तुम वैश्य हो तुम क्षत्रिय हो इसमें है और ब्राह्मण लोग इतने कट्टरवादी होते हैं देखो प्रसाद ऐसे उठा देना ऐसे ऊपर कर देता है इनके पर्सन आ है यहाँ तक भी नियम ऐसे ब्राह्मण की कोई छाया तक नहीं पसंद किसी है जब ब्राह्मण लोग जब ठाकुर जी की प्रसाद लेकर के आते हैं और उस स्थान को बंद कर दिया जाता है और Like in Jagannath you have seen, कपड़ा है ना they when they bring the bhog for Thakurji, they close the doors and nobody should touch the pujaris while bringing the bhog. तो यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र So Gopkumar started to think, this is Thakurji's temple, so there should be no differentiate between Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Everybody should be treated equal, whether it is woman or man. सबकी समान अधिकार है
Everyone has the equal adhikar, rights. ये भेद होना नहीं चाहिए। So there should not be any भेद कोई करे differentiation. बाहर करे, किंतु भगवान के दरबार में भेद तो होना नहीं चाहिए। If they want to do differentiate, let they do outside the temple. But inside the आजकल temple आजकल premises, there should be no differentiation in front of the Lord. उसके किसी प्रकार से So Maharaj is telling, till now in Jagannath Puri, if he is not an Hindu by birth, विशेष करके they will not allow फेस कॉम्प्लेक्स है inside the temple also. तो उनके तो बिल्कुल भाई हिंदू है उसको भी पता ही नहीं मैं नहीं हिंदू बोला हूँ है और क्या तो उसी प्रकार हाँ गुरुदेव को भी नहीं पढ़ा था गुरुदेव के सब जानते हैं किसी को तो एक कथन सुना दीदी को कहे तो नहीं करता गुरुदेव के तो देखने से इंडिया देखने से बुरा होने से इंडिया पता लगा ज़्यादा जिसे जैसे तो मान कोई ऐसा नहीं है ज़्यादा कोई ज़्यादा बुरा है कुछ लड़की पुरुष में रहने वाले गोत्र बताओ बता दिया हाँ वो इतना ही आप संदेह करें तो आपको गोत्र गुरुदेव के रूप है ये मैं कभी नहीं सुना जो यदि को कारण होते रंजित कर गुरुदेव एक बार गुरुदेव ने करके बोले देखो मेरे भक्त के जाने नहीं देंगे मैं नहीं जाऊँ ये बात So one day Srila Bhaktivinoda Goswami Maharaj was telling, if they do not allow my devotees, then I will also not go. And that was his humble and simplicity. हाँ गोप कुमार कहने लगे इसमें मेरा मन दुखित होता So Gopkumar was telling, by seeing all these things, my mind was so much sorrow, गोप कुमार कहते feeling pain. ब्राह्मण मेरे मन में मैं तो राजा हूँ तथापि ब्राह्मण लोग अपने Gopkumar said, although I am the king, दो है I could not able to control these Brahmanas because they always follow the strict rules and regulations for the worship of Thakurji. पर भेदभाव है ठाकुर जी के मंदिर भगवान के दरबार का होता है So first thing, साक्षात वही they always following very strict rules, and second thing, they have the differentiation between the people and society and caste and race. ऐसे भेद क्यों नहीं है सबके समान अधिकार है जीव मात्र तो भगवान के दास है तो इससे मेरा मन बहुत दुखित रहता था एक दिन मैं सोच रहा था क्या करूं नियम के तो मैं उल्लंघन नहीं कर So one day I was thinking what to do, because I cannot break the rules and regulations or change the rules and regulations, because Brahmin people become very angry, विधि मार्ग भी चलते हैं हम कुछ कहें तो शास्त्र में दिखाएंगे and if we tell something they show reference from the scriptures. इसलिए मेरे मन बहुत दुखित So my mind was disturbed so much. दो वैष्णव दक्षिण से आए और आकर के मुझे जगन्नाथ जी की कथा श्रवण कराई So Gopkumar is telling, two devotees came from the South India and they spoke about the glories of Jagannath. They were telling, whoever goes, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, caste, race, anyone, they say if they are Hindu, they are just allowed in the Jagannath temple. कोई भी व्यक्ति आ जाए वहीं पर प्रवेश अधिकार जगन्नाथ और दूसरी जगन्नाथ जी की दर्शन जो है 24 घंटे में 21 घंटा कितने 21 आवर्स On Jagannath Ji's darshan is open 21 hours for everyone in the 24 hours. 21 hours it's open. इतने सुंदर रूप इतने सुंदर रूप Such a beautiful form, his eyes are such beautiful. Everyone will get mesmerized by Jagannath's beauty. And how is Jagannath? Jagannath is so merciful. Such a beautiful smile he has. By having darshan, all the people become mesmerized. जगन्नाथ जी के दर्शन और जगन्नाथ जी के प्रसाद सबको दिया जाता है And Jagannath Ji's prasad is given to everyone. विचार तो बहुत दूर की बात है वह झूठन की विचार है आप कभी जाइए गए आप जगन्नाथ आनंद मार्केट में जाइए आपको ब्राह्मण लोग बुला के प्रसाद हाथ में दिए खाओ फिर दूसरी कहे आप हमारे लिए देखो मैं पर कोई हाथ धोने की जरूरत नहीं
So in Jagannath Puri, there is no need to wash your hands after eating. It is not considered as juta. So Lakshmi Devi herself prepares Jagannath's Mahaprasad. And such a glories that place has. So at a single time, 7, 8 kinds, different pots has been kept in one single stove for cooking. And everything will be cooked properly. And the prasad is so tasty and delicious. Whatever prasad you eat. Maharaj is telling, I was staying 5 days in Jagannath Puri. Every day I used to eat Jagannath Mahaprasad. Jagannath Prasad is such a beautiful and delicious. What to do explanation of this Mahaprasad. And especially in 24 hours, 21 hours, Jagannath Ji gives his darshan. Any devotee came, if anybody offers, they just take the Mahaprasad. So it is said that Jagannath's hand is never washed. So Jagannath Ji is such a merciful that when Jagannath has his meal and he will never wash his hand because immediately some other devotee is bringing some bhog for Thakurji. And devotees. So in Jagannath Puri, no mantra or anything, just showing to the Lord itself it will become prasad. This is Jagannath's glories. This is Drishti Bhog. Just by seeing, the Lord will become so much pleased. Any devotee, especially in the Rath Yatra, he breaks coconut on the ground and he just shows to the Jagannath on the Rath. That's all. That will become prasad. On Jagannath Ji's, especially rice prasad, such a beautiful and delicious. All the rice will be boiled perfectly. This is amazed. You prepare in your house, you cannot do because you have to mix so many times in the spoon. But Jagannath's prasad is not like that. Just put everything at one time and just put it on the stove, it will boil and you can take it. No need to mix also. So at that time, 25 paisa ticket, and we used to go to the Jagannath's kitchen and watch how the Brahmin people will cut the vegetables, how the rice dal has been stored, and how they prepare Mahaprasad, and everything we could have seen there. My Gurudev, Srila Vaman Goswami Maharaj, at that time he was in Nilachal Gauriya Math.
some devotees had come, Grihasthas. तो वे लोग क्या थी What they did, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए गए। they did उन्होंने not जैसे कहा went to इस the प्रकार darshan का of समय है, Thakurji. टिकट खरीद करके आप ब्राह्मण साहब है उसी घर आप देख सकते हैं। और ब्राह्मण लोग क्या कैसे सब्जी कहाँ काट रहे हैं कैसे करना So they went to चाहिए। see Thakurji's darshan, and they went to the kitchen for having the darshan. Buying the तो ticket, एक they saw बालक था there 12 was a वर्ष का small था। boy. तो वह पर ठाकुर जी की जो सब्जी अपन नगर में काट रहे थे उसमें बेगुन था। उसे बेगुन काटते जा रहे थे, बेगुन में कीड़ा था, उनके दर्शन हुआ। So one small boy, 12 years, he was cutting the brinjal, ग्लानि and there was some spoiled brinjal, so he was cutting that also for उनके मन Thakurji. मन विचार में ठाकुर जी के ऐसे कैसे भूख लगते हैं। So this family, they were thinking how कीड़ा क्या Thakurji करते हैं। they do bhog फिर इसके बाद जो है चलो like शाम के this, समय उनके and पिताजी after that evening ठाकुर जी की भोग लेकर के आए, माने जगन्नाथ जी की his भोग, father चावल दाल gave the सब्जी। bhog to the Jagannath and he bring to the house. देखो उसके पिताजी वही बेगुन की सब्जी लेकर के आए। And his वो father, आके कहने लगे who देखो went to the darshan, he bought the बोले same नहीं ये Mahaprasad प्रसाद नहीं है। brinjal. क्योंकि उन्होंने देखा ना ठाकुर जी की कटा मिला। देखो उनके पिताजी ने नहीं जगन्नाथ जी के प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। बोले नहीं मैं उसके पिताजी जबरदस्ती उनके पत्थर में डाल दिया, फिर वो खाए नहीं, नीचे डाल दिया। और आश्चर्य की बात है भगवान की इच्छा से वो बेगुन को देखा उसमें कीड़ा है। And the Grahastha family who went to the darshan, they saw this brinjal which was ripe and having some insects in it. So they were feeling very bad. But when they purchased the Mahaprasad, he purchased the same sabji, began sabji, and when they were served, the same not good, like the began means brinjal which was spoiled, it was served to his plate. चिल्लाने लगे उल्टा पुल्टा। And the night time when he was sleeping, two insects came and started to bite his body, and his body became so red. He was he was so screaming out of pain. कहाँ डॉक्टर Night 12 o'clock, where is the doctor? No one. वो नर्सिंग होम में ले गए भर्ती करा So they went to the nursing room, दवाई दे दिया, फिर उसे they gave medicine, but no, it was not having anything result. He was always suffering. जैसे मेरे गुरुदेव तो उस समय थे At that time, Srila Vaman Goswami Maharaj was present at that time, and he came to know everything. पहले क्यों नहीं मुझे बताया। Gurudev said, "Why you did not tell me before? मैंने अपराध कर दिया। You did the offense to the lotus feet of Thakurji. This is Mahaprasad, Jagannath's Mahaprasad." शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ जी महाप्रसाद में संसार प्राप्ति In the scriptures, it is mentioned Jagannathji's Mahaprasad. Immediately, you should accept. तो मेरे गुरुदेव ने कहती बोले एक काम करो पंडा के बुलाओ। So they said, "You bring the panda." So night 3 o'clock, they bring a panda, Jagannath's panda. उसके बुलाया बोले क्या करो। बोले तो एक काम करो गले में गमछा लगा करके जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो। मेरे गुरुदेव ने कहा ये बालक So Vaman Goswami Maharaj said, "Bring one panda." Then the panda came. Then Vaman Goswami said to the panda, "Oh panda, please ask to the Jagannathji to forgive this person." So this panda did prayers to Jagannath, and all his body, everything, insects were gone, and all the body was cured. So this is Jagannathji's Mahaprasad. Immediately when it comes, you should not dishonor it. You should always accept it with great honors. ठाकुर की भूख लगी कहा गया और भाई देखो पंडा उस दिन क्या क्या बेगुन प्रसाद लेकर गया। हम देखा गुरुदेव तो कहा गया देखो हम लोग चातुर्मास्य कर रहे हैं। So one day Guruji was staying in Jagannath Puri, and one panda bought some brinjal, Mahaprasad. किंतु ठाकुर जी के ऐसी इच्छा हुई एक जो है बेगुन के प्रसाद आ गया। और सबको तो क्या करें गुरुदेव कहने लगे देखो ये जगन्नाथ जी की इच्छा है हम चातुर्मास्य करें कुछ भी करें ये देखना नहीं है बेगुन के प्रसाद ठाकुर जी के प्रसाद सबको दिया गया। 5-6 से लोग तो थे हम। So this is, Maharaj said, this is the mercy of Jagannath. Whatever chaturmasya we do or not, this is the mercy of Jagannath, we should accept it. जगन्नाथ जी के प्रसाद साक्षात
साक्षात जगन्नाथ, because this Jagannath Ji's Prasad is Sakshat Jagannath. हमारे भक्ति विभूति गोस्वामी महाराज, So Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj story. उन्होंने एक बार जगन्नाथ मंदिर में गए, So one day he went to Jagannath Mandir दर्शन करके for Thakurji's darshan, पट बंद हो गए। and Jagannath Ji's altar was closed. उनके मन में बहुत दुखी को He was very unhappy in his heart because today I did not have the darshan of Jagannath. मठ में आकर के कन्वर्सेशन करने जगन्नाथ को प्रसाद दिया। So he went to the mutt and said, "Bring Jagannath Mahaprasad." And Jagannath Mahaprasad came. He did parikrama of the Jagannath. He did parikrama of Jagannath Mahaprasad, and then he accepted Mahaprasad. ये जगन्नाथ जी के ठाकुर जी के प्रसाद साक्षात जगन्नाथ स्वरूप में माना जाता है। आज This Jagannath Prasad is considered not different from Lord Jagannath. जो मैं कथा में बोला था, गोपकुमार करने मातु ब्राह्मण, मैं इसी प्रकार So Gopkumar said to Maturi Brahman, so in this way, in the South Indian Vaishnavas, I heard the glories of Jagannath. क्या समझ किया, ये जगन्नाथ जी 24 घंटे में 21 घंटा सदा को दर्शन देते हैं और वहीं पर किसी प्रकार की मृत्यु नहीं पहुंच जाए। So he heard two things. What are the two things? Jagannath Ji gives darshan 21 hours in a day, and there is no differentiate between the caste and race. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, everyone is same there. By hearing this, I left Anant Padmanabh and I went to Jagannath Puri. देखो मैं वही मंत्र जप के I chanted the same mantra, Shri Krishna Gopala Hare. और मंत्र जप करने के साथ ही साथ And by chanting this mantra immediately, मैं जगन्नाथपुरी में I reached Jagannath Puri immediately ऐसे सुंदर रूप, and I saw Jagannath's beautiful form, बड़े बड़े आँख, big eyes, beautiful smile, and beautiful face. मेरा हृदय Having the darshan, my heart became melted. एक तो मेरा हृदय में And every day विरह में तड़पता था। I was also feeling separation of my Guruji. वो विरह ज्यादा विरह की जो होते हैं। But after having Jagannath Ji's darshan, my separation became less. जगन्नाथ जी 21 घंटा दर्शन देते हैं, Jagannath Ji gives 21 hours darshan, and I, like a normal person from the far away, I have the darshan of Thakurji. अहो जगन्नाथ जी कितने सुंदर, Oh, Jagannath Ji, such a beautiful. और जगन्नाथ जी के पट जब बंद हो जाता था, And Jagannath Ji's, समुद्र के उपकूल में आकर के when Jagannath Ji's altar was closed, I used to come at the banks of मैं ocean, घूमता रहता था और मैं मेरे गुरुदेव में and I was wandering and I was remembering my Gurudev always. जब जगन्नाथ जी के दर्शन होता था तो मेरा विरह जो है वो कम हो जाता When I have the darshan of Jagannath, my separation was becoming down. And when Jagannath darshan was not happening at that time, my Gurudev's separation, I was feeling so much. Where did my Gurudev went, leaving me? Where should I search him? In this way. था। एक व्यक्ति था अपने गुरुदेव के One day a person was there who was doing his Gurudev's seva. और उनके गुरुदेव बहुत वयोवृद्ध हो गए, वृद्ध हो गए। And his Gurudev was very old age. तो एक दिन गुरुदेव की सेवा करते करते One day while doing Gurudev's seva, he said, "Oh Gurudev, आप तो वृद्ध हो गए, 90 you became so old age, 90 years. When you will depart from this material world, who knows?" थोड़ी सी हवा झुपकी आ जाए, वो आम क्या करता है, Like how the mango in the tree, when some breeze is flowed, sometime mango fall down. So 80, 90 years, no one knows when they depart from this world. गुरुदेव आप कब चले जाओगे, क्या पता। So in my mind, I got this kind of desire, Gurudev, when you will go, I don't know. आपके सहारा बिना और नहीं कोई सहारा है, कौन मुझे सहारा देगा। तो इस कथा को सुन करके गुरुदेव कथा लगे, बेटा तुम ऐसे क्यों करते हो? By hearing this, Gurudev said, "Oh my child, why do you think
I always stay with you. Always. In your happiness, in your sadness, I always stay with you. तुम ऐसे मत छोड़ो, एक मत You don't think that I am separated from you or left or not with गुरु you. तुम्हारे साथ में सदा सर्वदा। Guruji always stays with you in इसके every बाद गुरुदेव ने circumstance. समझाया, सांत्वना In वार्ता this way, दी। he said, इसके he पश्चात made कुछ दिनों के pacified बाद him. गुरुदेव So after that, after some days, Gurudev left. अभी इधर He was उधर feeling थोड़ा very सा sad. क्या करें, उन्होंने एक बिजनेस शुरू कर दिया। So he started a business after his Gurudev departed देखो from this world. बिजनेस जब स्टार्ट कर दिया, When he started भगवान की इच्छा से business, एक बार गुरुदेव की इच्छा से Bhagwan's desire, बिजनेस Gurudev's desire, his बढ़ने लगा। business started to और go उनके up, अनेक मित्र आकर के उनके and साथ साथ he में रहने got लगे। many kinds of friends. पैसा हो तो आप If इस there सर is पे money, करके आप कैसे हो कैसे हो? everyone say, how are you, how are you? और वही आप जब If धन को जान if you do not have any money, वही व्यक्ति कहेंगे who are you, who are you? Who are you, who ये are you? जगत के रीति है। This is the आपके पास truth अगर of पैसा this पैसा material कहेंगे, world. आप कैसे हो कैसे हो कैसे हो? आप दरिद्र दीन हो जाए कोई कुछ नहीं मालूम। ये जगत की रीति है। This is the riti of this jagat. सब राजा को सभी लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। वही राजा जब राज सिंहासन पे चुप हो जाते हैं, किसी को सम्मान नहीं करते। ठीक उसी प्रकार So in this way, उनके अनेक मित्र सब आनागमन होने so he was getting so much money in his business and he was boosting in his business. Many people came, gone, like people started to come to him. बिजनेस चल रही कुछ समय के So बाद after some एक time, साल के बाद 2-3 years, वही बिजनेस same business, sometimes up, sometimes down. 10 दिन के बिजनेस फेल हो गए। So sometimes his business became fake. All money, wealth he lost. मित्र आदि लोग सब उनको All his friends, relatives, everyone left him and went. एक दिन इस कथा में थोड़ा जब उनके पास धन संपत्ति है, When he had money and other things, one day he had this feeling in his heart. Gurudev said me before leaving this material world, he said, in your happiness, in your sadness, I will be with you. So in the mind he was thinking, क्या गुरुदेव मेरे साथ में है कि नहीं? today I had all wealth, what Gurudev is there with me or not? Like that he was thinking. तो सो गए, So he slept while thinking like that. गुरुदेव आकर कहने लगे, बेटा तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? In his dream his Gurudev came सपने and में said, मेरे साथ वार्तालाप होने लगी। कि गुरुदेव आप मेरे साथ में so there was a conversation in the dream itself with the Gurudev. So Gurudev, समुद्र के तट पर so he was telling Gurudev, you are not with me now. So Gurudev telling, I am always with you. So in the morning when he was walking के साथ ही साथ on the seaside, आदि जप करके after he took bath and he did Gayatri Mantra Japa, so he was alone walking on the seaside. कुछ दूर चलने के बाद पीछे घूम करके देखा, So after some time he saw behind, he saw along with his footstep, there was his Gurudev's footstep also. So by seeing this, he became so much faith that Gurudev, whatever he said was truth. तो इसके बाद बिजनेस चलने लगे। इसके So, बाद उसको हटात so business was going on good at that time. After some time, the business became down. All the people left him. अकेला रह गया। He was alone. एक दिन मन में उनके चिंतन होने लगे, गुरुदेव ने One day in the mind, he was thinking, Gurudev said me, in your happiness, in your sadness, I am always with you. So he was thinking like, when I was rich, I saw the footprints of Gurudev. So now I am very poor because I lost my business. Is Gurudev with me? All my friends, everyone left me. What, is Gurudev is with me or not? By thinking like this, second day, next day, he went on the banks of sea. He was walking on the seashore and he was turning back, but there was no footprints of his Gurudev. It was his footprints. There was no footprints of his Gurudev. So he started to think, so
Gurudev said, in your happiness, in your sadness, I'll always be there. So he was thinking like that. Oh, when I had wealth, Gurudev was with me. Now Gurudev is not with me. So in the night, in the dream, Gurudev came again and said, "Oh, my disciple, why do you think like this? I am with you always." Gurudev, when I went in my walking on the seashore, I saw your footprints before, but today I could not able to see your footprints. So Gurudev said, "No, my dear son, I am with you always." Then Gurudev. So again, the business went up, and his business was running in profits. संध्या के बाद रात्रि आ जाता है, रात्रि के बाद क्या होता है, प्रभात आ जाता है, अंधकार के बाद सूर्यालोक होता है, सूर्यालोक के बाद अंधकार होता है। ये जीवन की हमारी सभी इतिहास है, सभी के जीवन में ऐसे So in the life history, everyone's life history is like that. Sunrise, after sunrise there is a sunset, after sunset there is a sunrise. Happiness, sadness, it's always there. When the business was boosting up again, all the friends came to him and his business again boosted up. And he was thinking whether Gurudev's lotus feet is there with me or not. On the banks of seashore, when he was walking, he saw Gurudev's footstep was there along with his footsteps. So at the time of my happiness, my Gurudev gave darshan. So in the distress, my Gurudev's darshan I could not able to have. And again when I am in the happiness, now I could able to see Gurudev's charan chinna, his lotus feet. So he was thinking like, oh, if I am happy, only then Gurudev is coming with me. So he started to think, when I was sad, I could not able to see his lotus feet, but when I am always happy, I am seeing the Gurudev's lotus feet. So like this, he got a doubt in his mind. At that time, he slept in the night time, and again in the dream, Gurudev came and said, "Oh my son, why are you doubting on me?" So he said, "Oh Gurudev, when I was having money, that time I saw your footsteps. When I did not had money, I did not able to see your footsteps. When I again got some money, I saw your footsteps." So Gurudev said, "I am always there in your happiness and sadness. Gurudev, when I was poor, I could not able to see your lotus footprints." Gurudev said, "So when you are unhappy, when you are running in the losses, at that time whatever you saw the lotus feet sign is not your lotus feet sign, it is my lotus feet." So then Gurudev gave example to make him understand. When a small boy started to walk along with his mother, holding the finger of the mother, after some time the kid started to say, "Oh mother, my legs are paining, please take me into your lap." So what mother will do? Mother will take the small kid on her lap. Again after some time, when this baby get relaxed, again it says, "I will walk again now." So in the same way, mother is always with the kid. In the same way, the Gurudev said to this boy, "When you were in the problems, I was there. I was carrying you in my lap. Like a small baby, I was carrying you in my lap." So Gurudev said this. So Gurudev said this, when you are in the losses, I gave you encouragement and I gave you utsaha to go further and to do business.
and because of that, you got your business back again. इसमें समझो तत्व सिद्धांत। So understand this. This is Tattva Siddhanta. सुख में दुख में In the happiness, sadness, भगवान सदा सर्वदा है। the Lord is always with us. गुरु ही हमारे पास एक भगवान ही हमारे पास गुरु के निकट नित्य वर्तमान है। इसी सिद्धांत को जो समझ लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उनके जीवन में कोई दुख न कोई सुख, न कोई मन में किसी प्रकार So again, further Harikatha they are telling. Gopkumar was telling Maturi Brahman, O Maturi Brahman, when Jagannath's curtains are closed, I used to walk in the seashore. I used to think about Vrindavan, and whenever I used to think about Vrindavan, I used to feel separation of my Gurudev more and more. And used to remember the same Vrindavan, Yamuna's banks, Keshi Ghat, Rasastali, everything in the separation. In this way, by seeing the ocean, I used to think Yamuna and I used to think of Vrindavan. One day when I was feeling the separation in the banks of sea, ocean, so Gopkumar's Gurudev appeared in front of Gopkumar. यदि किसी की प्राप्ति पुनः प्राप्ति होता है, वो जैसे उस धन को प्राप्ति करके आनंद में उल्लास करके रोना शुरू कर देते हैं। कोई विधवा स्त्री के एक लौता बेटा अकस्मात शरीर छोड़ दिया। वो बेटा के सहारा में चल रही थी और उनके बेटा आज क्या चले गए। और उस बेटा चले जाने के बाद, मर जाने के बाद, वो जैसे रोना शुरू करते पागल की तरह सिर को कूदता रहा। भगवान भी कितने प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पति तो चले गए, मेरे एक सहारे जो छोटा बालक था जिसके लेकर मैं छोटा था, तुम भी उसको ले लिया। So one day a widow, she was crying because she lost her husband, and सिर को जो है कूटने लगे, बाल को, सिर के बाल को दो हाथ में रख करके रोना। इतने समय कई संत महात्मा पधारे। उस संत महात्मा उस स्त्री की ऐसे रोना देख करके उन्होंने क्या किया, मंत्रपुत करके उनके दिव्य हस्त जो है, संत महात्मा हस्त जो है, वो विधवा के बेटा के छत पर रख दिया और देने के साथ ही साथ उसके पुत्र क्या हो जाता है। So one day this widow's kid was died, and she started to hit her head, and she was telling, "Oh my God, you already taken my husband, now you already taken my son." So meantime, one Sant Mahatma came to her house and saw her pain and kept his hand on the dead body of his son, and immediately the son got life came again. So at that time she hugged her son and she was keeping him on her lap. Because Maharaj is telling this example because when you lose a important precious gem and when you get it back you take it so carefully. So in this material way the mother's gem is her son. So she lost her son and she got back her son after some time. So her heart was filled with love. Even in that happiness also it was so much separation and pain of sorrow. It was like mixed emotions. In the same way Gopkumar also started to say, so for which Gurudev I was feeling separation,
By accidentally on the seashore, Gurudev gave me the darshan. और गुरुदेव के दर्शन करके By गुरुदेव ने having the पूछा उस Gurudev's समय darshan, I hold Gurudev's both the lotus feet. केवल उनकी मुखारविंद में दर्शन करने Just by seeing his लगे lotus आंख से face, आंख की धारा बस प्रवाहित होने लगी I मुंह started to पकड़ने लगे tear मैं sheds, कुछ बोल नहीं पा shedding रहा the था tears किंतु from my मेरा eyes. गला I could not able to speak anything because my voice got choked. गुरुदेव ना जाने मुझे आशीर्वाद देते क्या क्या बोलते जा So रहे Gurudev was हैं इतने मुझे कान में पड़ा गुरुदेव कहने लगे हे कुमार so Gurudev said, यही "O सब Gop है Kumar, नित्य धाम में हे तुम्हें दर्शन दूंगा, तुम्हारे साथ में हूँ। he said, I am always with यही you हमारी सब and this is your Swarup." मैं कुछ पूछने जा रहा था किंतु I could not able to ask anything because I was not having the मैं कुछ strength to नहीं ask पूछ him. सका मैं कुछ नहीं किया I did not ask ये गुरुदेव anything आप to कहाँ से Gurudev. क्या है कहाँ से क्या आप कुशल में है क्या है I did ऐसे not ask पूछते anything हैं like, पूछते हैं "Are you? आप क्या प्रश्न करते हैं आप How are कैसे you? How are you? How are you doing?" Anything like this I मैंने ये did सब not कुछ भी ask. नहीं पूछा I did not ask केवल one गुरुदेव के word चरणों also. में पकड़ कर Just I hold my और Gurudev's आनंद lotus feet and I kept on my chest. है जिस प्रकार खोए हुए धन को पुनः प्राप्ति होने से जो अवस्था हो जाती है और गुरुदेव ने ना जाने मुझे कुछ बोलते जा रहे हैं मेरे कान में सब सुनाई नहीं पड़ा क्यों मैं विभोष हो गया था गुरुदेव के इतने वाणी मुझे समझ में आए गुरुदेव कहने लगे तुम्हारे नाम को और तुम यही स्वरूप में So his Gurudev blessed him, saying that your name is Gop Kumar, Gop Gop Swarup. He said your name is Swarup and this is your Swarup. He said this. ऐसा जिसका जो है एकादश भाव और पंचदश 11 kinds of bhavs and 5 kinds of dasha. Nam, Roop, Gun, Leela, Seva, Madhurya, Parakashta, so many things. ये सब वर्णन है All these things are explained in one book, Jewels of the Heart. In that I have mentioned everything Maharaj is telling. जो सदा वो नाम चिंतामणि के ऊपर विशेष करके मैंने उस ग्रंथ को मैंने प्रकाशित किया महाराज जब दर्शन बदल करते जाएगा तो गुरुजी वो सब बताएंगे अधिकार जब हो जाएगा जब भाव दस में पहुंचेंगे गुरुदेव आपके सब कुछ बता देंगे एकादश भाव और पंचदशा श्रवण दशा भावन दशा पापन दशा ये समस्त जो है सब बताएंगे आपके नाम गुण सब गुरुदेव ने इतने संकेत मुझे दे दिया ये स्वरूप करके गुरुदेव मेरे हाथ से बात सुन जब गुरुदेव चले गए गुरुदेव की विरह में खड़ा नहीं हाँ गुरुदेव का मुझे दर्शन दिया था ना मैंने उसको पूछा ना कुछ किया So again, his Gurudev disappeared from there after giving his Swarup फिर पुनः मैं name. खो दिया गुरुदेव के लिए मैं तड़प रहा था इतने समय तक So I was searching for Gurudev from long time. Today Gurudev gave me the darshan. पूछा I could not able to ask him anything. Again he disappeared from here. At least I did not ask Gurudev, how are you? केवल मैं दर्शन किया बस Just I had his darshan, that's all. And Gurudev disappeared from there immediately. Again I started in the pain of separation. छोड़ करके फिर मैं पुनः So I left this seashore and I went to Jagannath Darshan. After coming in Jagannath temple, I had a beautiful form darshan of Sri Jagannath, वह जगन्नाथ जी के दर्शन करके मेरे हृदय में where Jagannath's darshan in my heart, the separation pain was becoming down and down. इस प्रकार गुरुदेव In this way, Gurudev's memory और भजन में करें एक दिन मैं इस मंत्र को and जप कर bhajan. कौन सा One day I was chanting this particular mantra, Gopal mantra. जप करते मैं While doing Gopal mantra, I was thinking, यदि मैं इस मंदिर में पुजारी बन जाऊं if I become pujari of this temple, Jagannath's temple, seva if I get,
So I will do more seva of Thakurji. तो ऐसे करता रहा था। इतने समय So meantime, ठाकुर जी the जगन्नाथ Lord Jagannath, जी उस देश के राजा को जो है आदेश दिया, he came to the king's dream and said, "You listen, ये गुप्त कुमार को जो है this Gop Kumar, मेरी सेवा करना। you assign my service to him." और वो राजा ने फिर अपने And the king what he did? कुमार को बुलाया और He called Gop Kumar उनकी सारी संपत्ति उनको दे दी। and he gave all his wealth to the Gop Kumar and said, "O Gop Kumar, from today you are the king of this place and you should take care of my Thakurji Seva." So like this he said, and he handed over everything to Gop Kumar. अरे गुप्त कुमार जगन्नाथ के क्या बन गए? Now Gop Kumar became the Jagannath Puri king ठाकुर की सेवा की and doing Thakurji Seva in a more and more way. करने लगे। But Gop Kumar started to say, "Hey Mathuri Brahman, जगन्नाथ जी के राजा बन गए, ठाकुर जी की सेवा में समस्त प्रकार के संचालन करते although I was Jagannath Puri's king हैं। and I was doing पहले जैसे नहीं था ऐसे Thakurji's king, न कोई मैं राजा Thakurji's king and the king of the city, I was always staying in a simple way, like a Gopa Balak, cowherd boy. देश में ठाकुर जी की सेवा और भी I was doing Thakurji Seva with more and more intense. इस प्रकार Like this, Lord's Seva and Jagannath Puri's kingdom ruling was in my hands. गुप्त कुमार कहने लगे माथुर So Gop Kumar said, "O Mathuri Brahman, in Jagannath Puri, Thakurji Seva कार्य आदि भाग को मुझे प्राप्ति हुई, and kingdom राजकार्यभार, was there to me, किंतु मन में मेरा एक but in my mind क्या था? there was a desire." मैं जब जब ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मैं आता था, समस्त सैन्य लोग है, और जितने मंत्री लोग हैं मेरे अगल बगल में चलता था। So whenever I came to the having the darshan of Thakurji, all the soldiers and ministers used to walk along with me and they used to say, "The king is arriving, the king is arriving," and immediately all the people, all the crowd, they used to clear. कोई उत्कंठा से ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे और मैं उस समय आने की मैंने नोटिस किया और If anybody was having darshan in Utkanta, in a highest mood, उस व्यक्ति के झटक, हे हट जा, हट जा। all my soldiers were clearing the crowd and them also. हे, बस और वह लोग दर्शनार्थी जो है दुखित हो जाते, जगन्नाथ जी उनके दर्शन नहीं होते। क्यों? जब मैं राजा राजा आ रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, तो साथ ही साथ साधारण पब्लिक का क्या कर दिया? हटा दिया। देखो हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री आ जाए जिस रास्ते से है उसके दो तीन वो गोली छोड़ करके समस्त जगह पे बंद कर दिया। कितने पुलिस, कितने चौकीदार, कितने So in the same way, even now, if the Prime Minister comes, they block all the roads, everything. The same way in the Gop Kumar also it was happening like that. बोले जाओ, पुलिस बोलते जाओ इस रास्ते से करके जाओ। अरे हमारी बेटा बीमार है, अस्पताल में यहीं पर आकर ले जाना है 2 मिनट में, नहीं तो मर जाएगा। पुलिस बोले नहीं नहीं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, साधारण लोगों के लिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक बिल्कुल जो है बंद है कि नहीं? आप यदि कहें ये नहीं मेरे बेटा का, मेरे पत्नी की जो है तबीयत खराब है, अस्पताल के पास में है, मैं इस रास्ते में जाना चाहता हूँ, बोले नहीं जाओ, घूम करके 1 घंटा घूम करके आओ। सिक्योरिटी गार्ड किसी प्रकार इसको कोई नहीं है कि नहीं? तो गोपाल उसी प्रकार देखने लगे। मैं जब जब ठाकुर जी के दर्शन करके मैं जाता था, तो अब देखा तो साधारण जनता की जो है हटा देते थे मेरे सिक्योरिटी गार्ड, और मेरे अगल बगल में अस्त्रधारी बॉडीगार्ड रहता है दोनों तरफ, आगे पीछे, क्यों महाराज है ना। गोपाल मनी मन विचार करने लगे, जब मैं साधारण रूप में जब मंदिर ठाकुर के दर्शन करें आराम से ठाकुर के दर्शन करता, किंतु आज मैं राजा बन गया, इसलिए देखो साधारण जनता के कैसे हटा दिया।
जनता के दुख मानव हृदय में आकर मेरे चित्त में जागृत कर। पहले मैं जब राजा नहीं बना था, मैं दूर से बस सामने आगे के ठाकुर जी के बाद दर्शन करता, किंतु आज मैं राजा बन गया, इसलिए साधारण जनता को क्या करता, हटा दिया, समस्त रास्ता बंद कर दिया। जो जनता के दुख होता कोई नहीं। ये महाराज आने से आज मेरा ठाकुर जी के दर्शन नहीं। फिर दूसरी एक बात है, गोप कुमार कहने लगे, जब मैं ठाकुर जी के सामने जब मैं स्तव स्तुति करता था, राजा में स्तव स्तुति करने लगे, इतने समय कोई मेरे सेवक आकर कहे, महाराज अभी अभी आपके राज दरबार में उपस्थित होना उचित है, इमरजेंसी। So Gopkumar is telling, so like this is happening, and whenever I used to have the darshan of Thakurji, they used to call me and say, oh my dear king, some very special guest has come to visit you, please come to the courtyard. So all these things were disturbing me. Like before, when I was in a normal way, I was alone and I was enjoying the Lord's darshan. I used to do stav stuti and I used to do pranam again and again. But today, being the king, I am not able to do all these things. So in my mind, this was having the disturbance, always created disturbance. He was always having like, why I become the king, why I had this desire, where I used to stay in Vrindavan. My birth happened in Vrindavan. Govardhan ka tat par. और आज मैं राजा बन के उच्च सिंहासन प्राप्ति हुई, आज देखो मेरे So in this way, the Gop Kumar was lamenting himself. After being king, I am not able to have the darshan of my Lord. वृंदावन मेरे जीवन समुदाय, वृंदावन मेरे हृदय से कहीं मैं ये जगन्नाथपुरी क्यों बैठा, ये तो द्वारका ही है। जगन्नाथपुरी की क्या रहता है, द्वारका के प्रविष्ट माना जाता है, वास्तव में तो द्वारका ही है। मुझे जगन्नाथ द्वारकाधीश जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, जो कथा आप लोग जानते हैं। रोहिणी देवी महिषियों के निकट जब कथा वर्णन करने लगे, वृंदावन की कथा वर्णन करने लगे, कृष्ण भगवान आकर के सुभद्रा देवी के अगल बगल में बैठ गई और माँ रोहिणी देवी जब वृंदावन की महिमा और विरह की कथा वर्णन करने लगी, कृष्ण भगवान के शरीर कैसे हुए, बिगड़ गए और सुभद्रा वही थे जगन्नाथ से। कहाँ मेरे वृंदावन सच्चिद रूप में मैं दर्शन कर सकते राज गोवर्धन, कहाँ जमुनापुरी, कहाँ वो कुंज जहाँ पर राधा गोविंद की विलास करी है, कहाँ वो कोयल के ध्वनि। So Gopkumar was thinking about his past, like how in Vrindavan I used to stay very happy after being the king of Jagannath Puri. I am not able to give time to the Thakurji, I am not happy. And I could not, I am just wasting my life. Now I being the king, I am being with so much security. I am not freedom to offer my pranams to Thakurji. I am not able to pray stavastutis. I am not able to be alone. So in this way, Gopkumar was lamenting himself in many ways. So he was thinking, because of these things, I would like to go to Vrindavan, and I will live rest of my life in Vrindavan. Like that he was thinking, and so he made a plan to go to Vrindavan. So Lord Jagannath himself came and said, "Oh Gopkumar, don't go away from me. I am very happy with your service. Why are you going from this Jagannath Puri to Vrindavan? Whatever in Vrindavan it is there, in Jagannath Puri it is there. In Vrindavan there is Yamuna, but see in Jagannath Puri we have a sea, it is like Yamuna. So in Vrindavan these are the gardens. Here also there are so many gardens.
In Vrindavan there is Giriraj Govardhan. Here Chatak Parvat is also there in the form of Giriraj Govardhan. Hey Gopkumar, please do not leave me and go. In this way Jagannath Dev was again and again telling Gopkumar, you stay back here, you stay back here. You are my dearest devotee. So although Krishna and Jagannath do not have any bhed, differentiate, as per the Tattva Siddhanta they are one. But in the Ras Vichar there is some Vaishishta speciality. So Jagannath Ji said to Gopkumar, please do not leave me and go, please stay here only always. But in my mind again and again this feeling was there, I will go to Vrindavan, I will go to Vrindavan. After a long time I left Vrindavan and I am not being back to Vrindavan. Now I have to go to Vrindavan. So this Gopkumar is telling to Matri Brahman. So when I had a desire to go to Vrindavan, Lord Jagannath used to come and tell again and again, please don't go and do my service, do my service. I am very happy with your service. Please don't go away, leaving me. In this way Jagannath used to tell to Gopkumar. So although Jagannath Ji was consoling him and telling again and again, Gopkumar's mind was not. So here also Thakurji is giving 21 hours darshan and 3 hours he is taking rest. कृष्ण जन्माष्टमी ठाकुर जी के राम कृष्ण स्वरूप बना देते हैं, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी बना देते हैं, जब ना है ये सत्य है। जहाँ जहाँ जैसे भगवान की लीलाओं की उत्सव आ जाते हैं जगन्नाथ जी से स्वरूप बना देते हैं, किंतु वृंदावन ठाकुर जी नित्य स्वरूप में त्रिभंग होकर के विराजमान होते हैं, त्रिभंग ललित है। इसलिए गोकुमार विचार करने लगे, मैं चाहता है इतने समय सर्वे से दो देवता लोग आए, देव लोग आए, गोकुमार के समझाया, हे गोकुमार तुम वृंदावन। So Gopkumar is telling like this way that in the Jagannath Puri the darshan is only for 21 hours and they decorate Thakurji in different ways, like they make Jagannath as Ram, Jagannath as Krishna, Jagannath as Ganesh. So in this way they change his form. So meanwhile when he was thinking, from the Swarga means heaven, from the heaven there was some aeroplane came along with 2 sevaks. और उसमें ठाकुर जी कितने सुंदर दर्शन देते हैं। उपेंद्र नाम से ठाकुर जी के नाम क्या है? उपेंद्र। स्वयं इंद्र के छोटे भाई। So in the heavenly planet the Lord is always in the form of Upendra and always giving darshan of there in the form of Upendra. So Indra and other devatas sit along with Upendra, and Ma Aditi, when she questions, Upendra gives answer for all the questions. So this Lord in the form of Upendra, he is always helping the devatas also. And whatever foods are prepared is so like a nectarian kind of thing. कल सुबह 3 बजे के बाद 12 घंटा उसमें बंदी करके रखा है। अभी लेकर के गए हैं, हम भी मथुरा नहीं देखा है, अभी लेकर के गए और सुबह 3 बजे बाजार में जाएगा और बाजार में जो थोक बेचने वाला है उनको बेचेगा, वो ले जाएगा, फिर वो ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो जहाँ पर छोटे छोटे खरीददार है 6 बजे उसके पास ले जाएगा, 6 बजे के बाद फिर वो बेचेगा, कब बेचेगा? दोपहर
10 बजे बाद बेचेंगे दुकानदार के पास यही जो है अभी काटा 3 बजे आज काटा बेचेंगे कब 10 बजे और आप रसीद बांधेंगे कब जल्दी आ जाओ 11 है कि नहीं है यही अनुसार आपका कब बनेगा 11 बजे अच्छा बात सकते हैं कि नहीं Is it true or not? और आप जो बाजार में यही पढ़ के कब खरीदोगे सुबह 11 You will purchase morning 11 o'clock. जैसे आलू पालक लेकर गए मैंने टक्का मैंने Fresh. बगीचे से लेकर गए किंतु वो जो लेकर के गए वो कब करता कार 11 बजे लगेगा 12 बजे 11 बजे आप उसे बना He taken from the field today and he will sell tomorrow. But in the Swarglok, सब कुछ क्या है everything is fresh. फ्रेश वहीं पर ना कोई ऐसी फैसिलिटी कुछ रखने की जरूरत नहीं In the Swarglok, no need to AC. सबसे शब्द जहाँ ठाकुर जी की सेवा उत्तम रूप से They do Thakur Ji Seva, very highest level. ठाकुर जी तो बोलते कुछ नहीं एक तो काम है ही In the Swarglok, Thakur Ji speak, and in this material world, Thakur Ji don't speak. आँख पे गोल 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 है रसगुल्ला His eyes round color, किंतु स्वर्ग में देख just like Rasgulla. उन्हें पर ठाकुर But in the Swarglok, कौन है उपेंद्र Thakur is the Upendra. His name is Upendra. जब जब माँ अदिति स्मरण कर When Mother Aditi साक्षात प्रकट हो जाते हैं समस्त देवता लोग चैत्र ठीक करके बैठ जाते हैं और जैसे जैसे प्रश्न आदि करते हैं वो प्रश्न समाधान करते हैं उनके जितने भी विपद आपत्ति है ठाकुर जी सारे साक्षात Thakur Ji solve all problems. इतने सुंदर रूप And Thakur Ji very beautiful roop. है कभी मंद 4 hands. Sometime smile. Very beautiful darshan. वो उपेंद्र की महिमा श्रवण कराया Who came from Swarg, he साथ ही साथ भगवान के मन में एक भावना है speak glorification of Upendra. कैसे भगवान चतुर्भुज में कैसे दर्शन देते ऐसे विचार करके भगवान क्या करने लगे वही गोपाल He think Gopkumar and chant the Gopal mantra. Shri Krishna. गोविंद हे नंद सुर कृष्ण हासी यशोदा तनय प्रसिद्धा इस प्रकार मंत्र जब ध्यान आदि जब मैंने किया मैं कहाँ चले गए Swarglok. Gopkumar chanted the mantra and he reached in the Swarglok. When he reached Swarglok, he seen the Swarglok and he seen Bhagwan Upendra, Mata Aditi Devi. भगवान ने कहा कि जब जब माँ तुम्हारा मन में Upendra said to Mata Aditi Devi, when you learn, then I will come. इसमें दो पत्नी के नाम विशेष है एक कौस्तुभ एक है दीति और Diti and Aditi. Diti is son Rakshas and Aditi son Devata, demigods. Upendra said to Aditi, anytime if you call, then immediately I will come. इसलिए उस सर्वलोक में स्वयं भगवान In the Swarglok, Swam Bhagwan, in the Sarup of Upendra. छोटे भाई मान दिया ये भी उपेंद्र का है इंद्र Indra Upendra. भगवान कैसे जनता है छोटे भाई के रूप में वहीं पर विराजमान होते हैं सबके He is just like a small brother of Indra. Gopkumar seen in that Sabha, उस सुधार्मा सभा में Sudharma Sabha. That is called Sudharma Sabha. माँ उसके निकट में बैठी Maditi is sitting here साथ भगवान उपेंद्र and himself Bhagwan Upendra giving the darshan. आज साक्षात जो प्रश्न है वो करें और सब प्रश्न उत्तर दे रहे हैं सब भगवान Everybody doing the question and he is giving the answer. स्वरूप
seen and very. ऐसे विग्रह मैं कभी नहीं देखा। विग्रह बातचीत करते हैं? देखा? क्योंकि वही पर संसार में भगवान बात कर रहे हैं। He said Upendra, he is talking to everybody. देख करके गोपकुमार को मन में बहुत पसंद था। Gopkumar seen and he was very happy. He think my life is successful. और सारे देवता लोग ठाकुर जी की कैसे सेवा भी कर रहे हैं। And all demigods serving to Upendra. Fresh. In the Swargalok, everything is fresh. और ठाकुर जी बातचीत भी कर रहे हैं। Thakur ji talking there. तब देवता लोग कैसे उनकी स्तुति आरती करते All demigods doing puja archana. And now Vijay Prabhu, he will translate. भगवान ऐसे देख करके मन मन विचार करने लगे, यदि मैं इंद्र पर प्राप्त करूं तो मैं भी इंद्र कैसे कर सकूं। So Gopkumar also thinking like, I also would like to do seva like Indra to the Thakurji, Upendra. This Gopal mantra is known as Mantra Raj. This is called, other mantras are known as Mantra, Mahamantra, whatever it is. But this Gopal mantra is known as Mantra Raj. Whoever chant this mantra in perfect way, all their desires will get fulfilled. Whatever, Paramarthik or Laukik. There is no doubt in this. Gopkumar said, Hey Matri Brahman, in this way I was doing Gopal mantra japa. And I had a desire that I would like to do seva of Upendra in a more and more nice way. So here you should observe one thing. The Gopkumar is always anchoring to do seva, always. Anant Padmanabh. When he became the king of Anant Padmanabh, why he became king? He became king because to do Thakurji seva. When he became the king of Jagannath Puri, he wanted to do Thakurji seva in nice way and form. When he went to the Swarga, and while doing Gopal Mantra Japa, he was thinking in his mind that I want to do more seva than Indra. And amazingly, at that time, Indra left his seat. Due to some reason, Indra left his seat and all the devatas made Gopkumar as Indra. So then Gopkumar is telling, then I became Indra. So wherever I went, I was situated in my Swarup. I was a same covered boy. I was not ornamenting myself with lot of jewels or anything. So Gopkumar is telling that I did not accept any items of the heavenly planet. I was just a normal. And after I get the throne of Indra, I was started to do Thakurji seva. After this, when I started to seva more and more, but in my mind there was a pain or sorrow. This Thakurji, Upendra, always doesn't give darshan. Whenever Mother Aditi remembers, that time only he gives the darshan. Then after that Thakurji will disappear from there. When Thakurji disappears, everyone will be in the separation of Thakurji. So I thought, even in this Indra seat is no use, because if Thakurji is not giving darshan, what is the use of crowning this Indra seat? So I started to think, what should I do? So I thought I will go to Brahmalok while chanting this mantra, and Brahmaji also doing seva. In this way, while doing Gopal mantra japa, he went to the upper planetary, to the Satyalok, Brahmalok.
So wherever I went to the different planets, all the Gopkumars said, "You stay with us, you stay with us. Where are you going? The Lord is always residing in your heart." So you always remember Him in the mind. So when you do mind bhajan, you'll not have any separation. So all the planetary people said, please stay here, oh Gopkumar, please stay here. So like this saying, I went to the Brahmalok in the Satyaloka, the planet of Brahma. When I went to the Brahmalok, I saw that Brahma was sitting on his crown. ठाकुर जी उनकी कितने प्रेम करती है। ब्रह्मा जी वहां पर सदा सदा जगदादी करते रहते हैं, हाथ में कमंडल लेकर के और 24 के अभी live है। आपको कितने सुंदर। So when I went to the Brahmalok, I saw so many beautiful things. Jagadishwar, the owner, the creator of the universe, and Thakurji always appear in the form of in the Havan. Thakurji has such a beautiful roop. Brahma's Adhishtatri Devata. He is Garbhodakshai Vishnu. Such a beautiful form he has. More than Upendra, he has beautiful form. And Thakurji gives for Brahma the Updesh how to destroy the Asuras, how to do creation, how to create this universe, everything he will speak to Brahma. Thakurji is such a beautiful form. After seeing this, I mesmerized myself in the form of Thakurji. So at that time, Gop Kumar in the mind he was thinking, if I become Brahma, then I can do Thakurji Seva more and more. And Thakurji's Divya Swarup, I can have darshan more and more. So he is still to Matri Brahman. So I started to do this japa again and again. And immediately, this Chaturmukha Brahma's lifetime was ended. And everyone made me to sit in the Brahma's post. I attended the Brahma's post. See how Gopkumar step by step where he is reaching. And always I also like Brahma was doing Havan sacrifice, and the Lord used to appear in this fire. He used to give darshan and he used to give instruction about the creation. All the devatas comes to the Brahma whenever there is problem. So demigods come to the Brahma and do stuti. So one day there was a big assembly of all the devatas. So there was a discussion saying that which is the topmost place. Gopkumar was thinking again and again. All the devatas assembled in Brahmalok. All the Vedas, Puranas came the form and appeared in the assembly of Brahma. Everyone gives their introduction to Brahma. I am Rigved, I am Yajurved, I am Atharvaved, I am Samaved. All the Vedas and all the Adhishtatri Devatas sit in their places in the assembly. All the Puranas also came there. All the Shrutis, they gave introduction themselves and appeared in the Brahma's assembly. All the Upanishads also came.
सब अपने अपने परिचय देकर के सिंहासन में बैठे। They gave their introduction and they sat in the assembly of Brahma. 18 पुराण है, सारी पुराण अपने अपने परिचय देकर All the Puranas, they sat in there. तो उस समय एक प्रश्न रखा गया, At that time, there was a question. पुराण अपने अपने परिचय दो, All the Puranas give your own introduction and speak about karma and gyan. सभी लोग अपने अपने वक्त So everyone, जो कर्म मार्ग है, they presented their views on that ज्ञान कांड और karma kanda, jnana kanda and upasana kanda. उपासना कांड दो प्रकार की है। Upasana kanda is again two types. One is Devata upasana and one is Bhagavad Vishnu upasana. लोग इसी में भटक जाते हैं, देवता भगवान की एक मान लेते हैं। एक होता है वेदों में दो प्रकार उपासना का है। In the Vedas, there are two kinds of upasana, worshipping. One is demigods worship, and another is Supreme Personality of Godhead worship. और एक कांड में होता है भगवान श्रीहरि की कैसे उपासना, वो उसके बारे में कहा। किंतु लोग साधन को समझ नहीं पाते, देवता और भगवान विष्णु के एक ही मान लेते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेवता मान करके उनकी पूजा आदि करते हैं। भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा के एक ही मानते हैं। किन शास्त्र में कहा गया है देवता नाम अच्युत जथा। So in the Shastra it said Devatanam Achyuta Yata. आने पर भी वो उच्च स्थान है, किंतु लोग इसे समझ नहीं पाते। कहते देवता नाम अच्युत जथा, देवता में सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री हरि, और श्री अच्युत भी देवता भी एक, भगवान विष्णु भी देवगण में है। वास्तव नहीं है। इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, ब्रह्मा विष्णु तीनों की एक ही मान लेते हैं, एक ही स्थान देते हैं, किंतु वास्तव में अच्युत स्वयं भगवान सर्वोपरि है। वो तो कृपा करके So nowadays people give a single seat for all the demigods and Supreme Personality of Godhead. They feel there is no difference. But this is not perfect. इसलिए वेदों में दो प्रकार उपासना मैंने कहा, ये कहा जाता है So in the Vedas there are always two kinds of upasana. विष्णु की उपासना, One is demigod worship and one is Vishnu's worship. देवता और श्रीहरि के एक मान लेते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जपन्न देवता जजन्ते सिद्धं गीता ते विमान कुंते जजन्ते अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, ये विधान नहीं है। So this is not Vidhi, this is Avidhi Purvakam. वास्तव में मेरे ही पूजा होता है, किंतु ये अविधि हो जाता है। क्योंकि सारे देव देवता मेरे तो आधिकारिक है, एक दातार और एक मालिक है। जो अज्ञात व्यक्ति, जो अज्ञ व्यक्ति ये सोचते यही मालिक होगा है, वो दातार की पूजा आदि करके वहीं से चल करके चले जाते हैं, है कि नहीं? जो जानते नहीं है वो दातार के सोचते हैं ये जो विशाल जो मकान है, इस मकान के मालिक कौन है? द्वारपाल, यही बात, यही व्यक्ति है। दरवाजा उसके लिए अच्छा द्वारपाल को क्या कहता है? द्वारपाल कहता नहीं नहीं मैं नहीं, क्योंकि जबरदस्ती पूजा के जाके द्वारपाल क्या करते हैं, वो सारे पूजा की सामग्री मालिक को पहुंचा देते हैं। नहीं तो दूसरे दिन मालिक उसको क्या करता, द्वारपाल को कहता है जो दूसरे के दिए हुए वस्तु को मुझे नहीं देकर खा ले, आप समझे जैसे। So Maharaj is giving an example here like how in this material world you do money order वो पैसा यदि आपके पास and money order comes to you, उसको रिगार्ड तो क्या करेंगे दूसरे दिन and in the same way the demigods are the messengers of the Lord. So whatever you give, they should reach it to the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. So in the money order you have to do signature and you should take the money, वो द्वारपाल इसको रिगार्ड क्या करेंगे, and this postman will reach the money to the exact person. So in the same way this Dwarpal or demigods, they always should give their whatever they get to the Supreme Personality of Godhead. So Vatsa means that presently it's Hari's puja is happening, but in the Vidhi Purvak. ये विधि नहीं है, समझ में? लेकिन तो जितने भी देव देवियां भगवान के तो
आधिकारिक कहा जाता है। अधिकारी माने उनके आज्ञावही सेवक बार-बार माना जाए, सेवक माना जाए। सेवक के कर्तव्य क्या है? सेवक वस्तु के पास पूछा जाए। So these demigods or the servant of the Lord, what is the duty of the servant? They should reach whatever they get to the Supreme Personality of Godhead, and they should obey the orders of Lord Vishnu. अपने विचार देने लगे। So this Ved, Upanishads, scriptures, everything, they presented their own things as per the karma and gyan and all. बताने लगे। अंतिम में भागवत पुराण उठे। भागवत And finally, Srimad Bhagavatam Puran came. अमृत भुजिया जे खाए, कदर्ज भक्षण करे, नाना जनी जोनी मरे। ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड के 20 के भंड है ना। So this karma kand and gyan kand is like poison. और उसके अमृत मान कर जो भजन And if you think that as amrit and if you drink that, नाना जनी भ्रमण करते हैं। they will be rotating in the cycle of birth and death. So this karma kand and gyanda kand is only for visha. Visha means poison. श्रीमद् भागवत क्या हुआ? So Srimad Bhagavatam says, speaks about bhakti. Through karma and gyan you cannot attain the Lord. Srimad Bhagavatam very much clearly said. भगवान से उद्धव के उद्धव The Lord says to Uddhav, Hey Uddhav, due to this karma and gyan, no one can attain me. Only by bhakti they can attain me. हे उद्धव, कर्म ज्ञान आदि की तरफ मुझे प्राप्ति नहीं होती। न संतो अध्यस्त पुस्तक में देखा भक्ति में वंचिता, न सदजीवन योगो, न संग धर्म उद्धव, न सदस्त पुस्तक में देखा भक्ति में वंचिता, न सदजीवन योग के द्वारा भी मुझे प्राप्ति नहीं होती संतो, न सदजीवन न संग। So Uddhav says, Krishna is telling to Uddhav, to the Sankhya Yoga or Yoga, meditation or anything, Swadhyay, by doing more and more scriptural studies, no one can attain me. Even by the penance, austerity, no one can attain me. Just only by bhakti one can attain me. So if they want to attain me, then they should do bhakti. सवै पुंसा परो धर्म हेतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुका प्रत्यताय आत्मा सुप्रसीदते. So Srimad Bhagavatam speaks like this. To the karma, jnana, yoga, you cannot attain the Lord. Only by bhakti you can attain the Lord. And by doing anushilan of the bhakti, this karma, jnana, bhakti, yoga, all the fruit of this will run behind you. भक्ति के अनुशीलन करो, देखो आपने जो चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुक्ति तक भी आपके चरण में आकर के कहेंगे मुझे सेवा के अवसर प्रदान करें। भक्ति So mukti and bhukti comes to the bhakti's lotus feet and says, please give me the service of the Lord. That is the glories of bhakti. भगवान की भक्ति करो, मुक्ति ये भक्ति मुक्ति स्प्रिया जागृत पिशाची नीति वर्तते स्थावर भक्ति स्तवस्तत्र कथम अमुद्य भवे। जो भक्ति मुक्ति के पीछे जोड़ते हैं उनकी भक्ति नहीं होती, किंतु जो भक्ति आचरण करते हैं भक्ति मुक्ति स्प्रिया ये भक्ति मुक्ति उनके पीछे पीछे जोड़ते हैं। समझ में आ गया? भक्ति के अनुसरण करो तुम सब प्राप्त हो जाएगा। कौन सा हम चाहिए भजन मुझे मिलता है नहीं, सीधी बात है। घर में रहने से एक मुट्ठी खाने के लिए तड़पना है, किंतु देखो आज रात में ये कहां से आता है? ये भक्ति के फल दे देते हैं। सभी लोग कहेंगे महाराज आपको कैसे सेवा करो, कैसे सेवा करो। भक्ति के छोटे Everybody asks Maharaj, how should I do seva? How should I do seva? ब्रह्मचारी को सन्यासी हो, तुम जब तक आश्रम में रहते हो सभी लोग तुम्हारी सेवा करते हैं।
बोले महाराज आइए आपके चरण पखारता हूं। मैं सत्य बात बोलता हूं, सन्यास छोड़ करके जाओ, घर में जाओ, पहले कुत्ते के वक्त सब बात करें। So Maharaj is telling, when you are situated in your ashram, brahmachari or sannyas, the people will call and wash your feet. But if you leave your brahmachari or sannyas, and if you go to house, they treat you like a dog. आप साक्षात भगवान हो, हम देखते हैं। हाँ? क्यों तुम भक्ति का आश्रय किया? Because you have taken the shelter of bhakti, so everyone washes your feet. And if you leave the bhakti, then you will be treated like a dog. वास्तविक सत्य है। This is the practical truth. थोड़ा तिलक तिलक लगा दो, गले में कुंठ माला लगा दो, जहाँ आप वैष्णव और ठाकुर दया सागर इदासी So just put some tilak and put the kantimala. People give you such a high respect. They consider you as Vaishnava. So just following the little rules and regulation, you will be honored high in the society. So how much money you will get when you work? Nothing, very little. But when you take the shelter of bhakti, you will get the words money to you. It will come to your lotus feet. This is the glories of bhakti. This is the fruit of bhakti. All these things. But if you use for your selfishness, then you are gone. But you should use all the money, wealth, whatever comes to the service of the Lord. That is the right time, right way. Oh, we should think, oh, but Lord has given this money, so we should use it for the Lord only. We should create a good temple for Him. We should serve the Lord's devotee. Srimad Bhagavatam says the same thing here. Bhakti is not so easy. Although bhakti is very rare, still it is easy. Sometimes still it is difficult and still it is tough. Swalpamalpasya dharmasya trayate mahato bhayat. In Bhagavad Gita it is there. Even a little bhakti if you do, the biggest problem will get destroyed. And in Kali Yuga, what is bhakti? It is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nothing to do, just chant this mantra. In yoga tapas, you should get up, say, do that, this, everything. So many. In bhakti, no, just wherever you do, whatever you do, just chant Harinam. Bhakti is not so difficult. Although it is very rare, it is so easy. In Gita, Bhagavad Gita says, what did Ajamil do? Just he kept his son's name as Narayan. At the time of end of his death, he chanted Narayan's name and he went to Vaikunta. Namabase Ajamil Paile Vaikunta. So in Kali Yuga it's so easy. Follow the 4 relative principles and then chant Hare Krishna. That's all. That's enough. Srimad Bhagavatam gives example in the 11th canto. He gives the Upadesh to Uddhav.
In the morning, get up and have the darshan of lotus feet of the Lord. चक्र है, वो चक्र के दर्शन करके तुम्हारे संसार चक्र अपने आप नाश हो जाएगा। सत्य है। हमारे विषय चक्र लिखते हैं भागवत में वर्णन तत्पाद पंकज पलास विलास वक्ता कर्मास प्रदितम गतिर्दि संतो तद्वन्नरिक्तमतो जतिर्युद्ध श्रोतागणस्तम कर्णम भजवा वसुदेव। इतना भक्ति के थोड़ा सा अनुसरण कर लीजिए, भगवान प्रसन्न हो जाता है और धर्म अर्थ काम चक्र की जैसे महारानी चलती है, उनकी दास दासियां उनकी सारे सामग्री लेकर भी चलती है। पिगदान समझते हैं, पिगदान सुखाते हैं, बाण चिवाने के बाद वो सूखते हैं। पिगदान है, महारानी चलती है, पान चिवा के लिए चलती है और उनकी दासी क्या करती है? पिगदान है। हमारे ऐसे नहीं मंदिर में जाते कोने में यहाँ पर कोना अंधकार होता है, मंदिर के थोड़ा बड़े होते हैं, पांच सेवा करके जाते हैं। देखो भगवान की काम नहीं है। Sorry, I could not able to translate some moods of Maharaj. खैनी खाते हैं? खैनी, तंबाकू खैनी मुझे तो पता नहीं है क्या चीज़ है जीवन में। कभी माता जी ये तो चाय तक मैंने अपने जीवन में नहीं किया। मैं इसकी बात करता हूँ, जीवन में मैं कभी चाय तक भी नहीं किया। आई नेवर ड्रिंक टी। मुझे भी पता नहीं है चाय कैसे है। सिगरेट पान भी तो बहुत दूर की बात है, मुझे भी अनुभव नहीं है चाय क्या टेस्ट है। और द टेस्ट ऑफ द टी हमें पता नहीं। वो खैनी की जो है उदाहरण देते हैं, खैनी खाए नहीं करते तो उसमें पता नहीं फिर चूना अगर है वो क्या ऐसे भी तो क्या करें बाकी के चुना जो है ना वो क्या मंदिर में चढ़ने के समय मंदिर में हाथ में तो लगा। अच्छा, मृत्यु के बाद जब लोग में गए जमाने में चित्रकूट बोले अच्छे से बताओ बड़े महाराज जी पाप है, ये तो खैनी खाने वाले हैं और ये ऐसे मानव बोले अच्छा कुछ पुण्य कर्म नहीं किए। बोले महाराज ये जो थोड़ा चुना हाथ में था ना ठाकुर जी के मंदिर में, वो ऐसे बोले चलो इसमें पुण्य हो गया, ठाकुर जी के मंदिर में चुना ही करके बोले इसमें तात्पर्य है। बोले ठाकुर जी के मंदिर में थोड़ी सी कोई एक काना कौड़ी भी लगा दी, भगवान को क्या देंगे और जाओ उसके मंदिर में जाते। मंदिर में जो मंदिर बनाना है, मैंने ये नहीं कहा मुझे भाई कोई नहीं खा सकता पांच चिवा करके शिक्षा है वास्तविक हमारे विचार भगवान के विचार में कोई पांच चिवा करके ठाकुर जी के मंदिर में ऐसे टूट ठाकुर कहते चलो बहुत पुराना मंदिर है ना, गाँव के मंदिर होते हैं बहुत बड़ा 100-150 है, कौन देखता है कि पैसा मिल रहा है। और मंदिर के एक जो क्या बोलते हैं सीमेंट झचर के और उसमें कोई थूक देते हैं ठाकुर का, कम से कम तो रिपेयर कर दिए रंग कर दिए। तो ठाकुर के विचार भगवान के विचार दूसरी होता है। तो इसका मतलब ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं तुम पांच चिवा करके ठाकुर जी के मंदिर में क्योंकि ठाकुर जी जो महान होते हैं ना वो सब गुण देखते हैं। आज महान जो होते हैं वो दोस्त भगवान से सिर्फ महान कौन होगा? आज वो चुना चुन भी मेहनत लग रहा ठाकुर जी कहते कम से कम इतने जगह तक मंदिर के इतने उनसे तो वो क्या कर